Good morning, students. So, how are you all? I hope you all are fine. So, children, as we know that chapter 9, solar radiation, heat balance, and temperature is going on, and in this chapter, we have already learned about the solar radiation, heating and cooling of the atmosphere, and heat budget of the earth. And today we will learn about the temperature and the factors controlling temperature distribution. Clear? So, before starting the topic, I would like to ask a question to you. What do you mean by the temperature? Okay. So, the interaction of insolation with the atmosphere and the earth's surface creates heat, and which is measured in terms of temperature. Okay, जो भी इंसुलेशन होता है एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस पर, उससे जो हीट क्रिएट होती है उसको हम टेम्परेचर के टर्म में मेज़र करते हैं, इसको टेम्परेचर कह सकते हैं. सो वाइल हीट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ particles comprising a substance, the temperature is measurement in degrees of how hot or cold a thing for a place is. Clear? तो उसको हम कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसको डिग्रीज में मेजर करते हैं. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. कि किस तरह से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक. द टेम्परेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस is influenced by the latitude of the place. We already learnt about the latitude in class 6, 7th, 8th, in 9th also. And the next is the altitude of the place. It is about the height of the any area or the place, we can say. Next is distance from the sea, the air mass circulation, the presence of warm and cold ocean currents, and the local aspects. So we will discuss this topic in detail. So let's start with the latitude. So how latitude control temperature or temperature distribution. So the temperature of place depends on the insolation received. It has been explained earlier that the insolation varies according to the latitude, hence the temperature also varies accordingly. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेम्परेचर जो है किसी भी प्लेस का, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड्स. हाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इक्वेटर पार्ट और द ट्रॉपिकल रीजन. The tropical region receives more insolation compared to the higher latitudes. Okay, in lower latitudes like tropical region, it is between the 23.5 degree north to 23 half degree south. So this place receives more insolation because ये जो part है वो direct sunlight के region में आता है. And अगर हम हाई लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, सो दीज आर द प्लेसेस जो कि डायरेक्ट सनलाइट ना रिसीव करके स्लांटिंग वे में एंड सम पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द हायर लैटिट्यूड्स लाइक पोलर रीजन्स रिसीव्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन. क्लियर? चलिए, कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड. यस, सो द एल्टीट्यूड कैसे कंट्रोल करता है? लेट्स सी. So the atmosphere is indirectly heated by terrestrial radiation from below. So therefore the places near the sea level record higher temperature than the places situated at the higher elevations. So in other words we can say the temperature generally decreases with increasing height. The rate of decrease of temperature with height is termed as the normal lapse rate. It is 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर. क्लियर? जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, एयर प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा? जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे एयर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. और
टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा और एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि कोल्डर रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द sea. So the another factor that influences the temperature is the location of a place with respect to the sea. So compared to land, the sea gets heated slowly and loses heat slowly. So land heats up and cools down quickly. So therefore, the variation in temperature over the sea is less compared to land. The places situated near the sea come under the moderating influence of the sea and land breezes which moderate the temperature. Okay, now come to the next, which is air mass and ocean currents. So like the land and sea breezes, the passage of air masses also affects the temperature. How? The places which come under the influence of warm air masses experience high temperature, and the places that come under the influence of cold air masses experience low temperature. Okay, which we will already discuss in the altitude wala part. So similarly, the places located on the coast where the warm ocean currents flow record higher temperature than the places located on the coast where the cold currents flow. Clear? Okay, so these were the some important factors which controls the temperature distribution, and in this we discussed the latitudes of the place, the altitude of the place, distance from the sea, air mass and ocean currents, and the last one is local aspects. लोकल एस्पेक्ट्स वी कैन सी दैट कि जो भी लोकल उसका वेदर रहेगा या वहाँ का एरिया का जो भी कह सकते हैं कि मान लीजिए यू आर इन द अंटार्कटिका, सो अंटार्कटिका का लोकल वेदर कह सकते हैं वहाँ पे क्या है, आई फ्रीजी टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, एकदम फ्रीज करने वाला रहता है. और इफ़ वी टॉक अबाउट द डेजर्ट एरिया, सो डेजर्ट में क्या होता है, एकदम हाई टेम्परेचर रहता है. तो दिस इज कॉल्ड द local aspects. So here we have completed this topic, temperature, and in the next video we will discuss about the distribution of temperature all about the world. Okay, and in that we will also discuss about the distribution of surface air temperature in the month of January and the July also. So till then, children, take care and bye.